is developed on the basis of the concept of a probability. What is probability? Probability refers to the frequency of occurrence of an event among similar events. Do you get my point? By definition, probability is the frequency of occurrence of an event among similar events. Then what is that? What is probability? Now, supposing I will ask you to throw a coin and you threw it. Now I am asking you, before throwing the coin, if I ask you to throw the coin 100 times, what would be the chance that head will come up and what would be the chance that tail will come? You will have to guess this answer. Tell me, if I throw a coin 100 times, what is the chance that head will come up and what is the chance that tail Head will will come? come 100 So it's times and maybe tail will also 50-50. come. So 50-50. 50-50. Naturally. And 50-50. that I don't know exactly what time head will come, but the probability, the best guess is 50-50. That is what is probability, best guess, the most scientific guess. Achha, now, if I throw two coins simultaneously, what kind of events will happen? Simultaneously, I keep two coins in my hand and then throw it. What kind of event will happen? Tell me, what kind of event? So 100 times head. So 100 times head and 100 times tails. 100 will be the probability. No, no, I am not asking you the probability. I am asking you what kind of event will happen. ଦିଟା କଏନ ଯଦି ମୁଁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ହାତରେ ଧରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଆସିବ ନହେଲେ ଟେଲ୍ ଆସିବ. ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଟୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍. ଦିଟା କଏନ ଫିଙ୍ଗିଲେ କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିବ? ଇଭେଣ୍ଟ Yes, ମତେ sir. ହବ. କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିବ? So that So may be two two into heads, two. two tails, one head, one Two tail, one heads. tail, one head. There will be three events. Maybe two tail, ଦିଟାକ ଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଦିଟାକ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ବା ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ. Now, the question I am asking, if I throw two coins, I come to know there can be three different kinds of events. Head, tail, tail. These are the three events. What is the possibility of a head coming out? 100 ଥରରେ. 100 ଥରରେ head ଆସିବାର probability କେତେ? କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଯଦି ଦିଟାକ କଏନ ପକେଇବି ଏକାଠି 100 ଥର, ହେଡ୍ ଦିଟାକ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ କେତେ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ? So 100 times. So 33. So 33. 33. Yes, sir. Any answer? So because there are three events, so 100 divided by 3 is 33 point something. So 33 events. 33 point something. There are three events and therefore there will be 33. But this is wrong. Now, how can you calculate the probability of these events? That is called on which the normal probability curve is best. What is the probability? You have head and tail, two things, and by that, what is the value of h plus t square? Tell me, what is h plus t square? A plus b square. h plus t square, kete? Anybody? H plus t square. School pattern. A plus b square. A plus b whole square. Sumitra. So A plus B whole square. सेमती a plus b whole square था, h plus t whole square से है कौन? So h square plus t square plus 2ht. h square plus 2ht We plus got t. H plus and T. Now, actually, now you see, h square
What is the coefficient of h square? h square रो कोफिशिएंट केते एठी 1 किछि कोफिशिएंट लिखाइने माने 1 h t रो कोफिशिएंट केते 2 t स्क्वायर रो कोफिशिएंट हला 1 1 ता माने टोटल कोफिशिएंट हला 2 + 1 + 1 मींस 4 हला चारि थरो जदी आमे पकेइबु दीटा कॉइन जदि हेड दीटा को हेड थरे आसीबो हेड टेल दिथर आसीबो दीटा को टेल थरे आसीबो दैट इज द प्रोपोर्शन बुझी परछो ना नहीं दीटा हेड जदि आमे पकेइबु चारि थरो गोटे थर आसीबो दी प्रोबेबिलिटी एक्चुअलिटी नुई गोटे थर आसीबो दीटा को हेड गोटे थर आसीबो दीटा को टेल दी थर आसीबो हेड एंड टेल दैट इज द प्रोबेबिलिटी तेणु 100 थर पकेइले हेड दीटा का आसीबो तार प्रोबेबिलिटी केते के कहबो चारि थर पकेइले हेड थरे टेल दीटा को हेड थरे दीटा को टेल थरे एवं हेड एंड टेल दिथर सेमती 100 थर जदि पकेइबो दीटा को हेड रो प्रोबेबिलिटी केते निकी 100 हैं बुझी पारुनो 100 sir 100 times it will come head 100 थर रे मु पकेइले दीटा को हेड ऊपर को आसीबो यार प्रोबेबिलिटी केते चारि थर रे दीटा को हेड आसीबो प्रोबेबिलिटी केते थरे 100 थर रे जो जिनस चारि थर रे थरे आसुची 100 थर रे सेटा केते रे आसीबो so 25 हाँ दैट इज द राइट आंसर सेमती दीटा को माने हेड एंड टेल दिथर आसुची चारि थर रे 100 थर रे केते आसीबो 25 50 अच्छा दिथर आसीबो रे चारि थर रे दिथर 100 थर रे 50 केते थर 50 50 50 sir हाँ हेड हेड आसीबो 25 हेड टेल आसीबो 50 टेल टेल आसीबो 25 दैट इज द प्रोबेबिलिटी अच्छा सेम थी यू मस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइक दिस सेम थी मु जदी तीनटा कॉइन धरि के एकाठी पकेई दी कौन कौन इवेंट हबार संभावना अछि इफ आई थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली कौन कौन हबो h प्लस t q बाय a प्लस b होल q लेख कागज रे सेठी लेख संगे संगे So HQ हाँ HQ and plus TQ. हाँ भूली गल ना स्कूल पाठ हाँ मु कही दउची HQ प्लस 3h स्क्वायर t प्लस 3h e स्क्वायर प्लस TQ बुझियला ना नहीं एटा हला a प्लस b रो होल क्यूब AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq लिखि दो ता संग संग अच्छा वर्तमान ताले तीनटा कॉइन पकेइले केतेटा इवेंट होउची गोटे इवेंट होउची तीनटा हेड आउ गोटे इवेंट होउची दीटा हेड गोटे टेल आउ गोटे इवेंट होउची दीटा टेल गोटे हेड आउ गोटे इवेंट होउची तीनटा को टेल टोटल चारिटा इवेंट होउची आमे जदी तीनटा कॉइन पकेइबु या भितरु जे कोनोसी इवेंट गोटे हबो आउट ऑफ दिस 4 अच्छा यार कोएफिशिएंट सब केते HQ रो कोएफिशिएंट केते फार्मूला 1 h स्क्वायर t रो कोएफिशिएंट केते 3 सेमती h t स्क्वायर Repeat the formula once again. a plus b रो होल क्यूब फार्मूला Sir, HQ plus TQ plus 3HT whole into H plus 3HT नहीं 3h स्क्वायर t HQ
प्लस टी क्यू प्लस 3h स्क्वायर टी प्लस 3h टी स्क्वायर प्रथमटा h स्क्वायर टी तापरटा h टी स्क्वायर h स्क्वायर टी माने दीटा हेड गोटे टेल ऊपर को आसीबो ऊपर देखा जिवो दीटा हेड गोटे टेल sir again confused sir HQ plus TQ plus 3h square T plus HT ना whole प्लस 3h टी स्क्वायर plus 3HT square ହେଲା sir एटा तो a plus b whole cube रो formula फॉर्मूला नुहे sir a plus b रो whole cube रो formula a square sorry a cube plus b cube plus 3ab whole into a plus b तब खोल दो ना 3ab होल इनटू a प्लस b खोल दो ना टोटल खोल देई एटा गुणी देले कोन हबो देखि दो ना okay sir दिस इज द फॉर्मूला hq प्लस 3h स्क्वायर t प्लस 3h t स्क्वायर प्लस t दिस इज द फॉर्मूला a प्लस b तमे जो फॉर्मूला करछो सेटा स्ट्रेट फॉर्मूला टे नुहे तमे ब्रैकेट रे रखि दिछो yes sir 3ab इनटू a प्लस b yes तब sir खोल देले देखिबो से फॉर्मूला हबो ब्रैकेट भीतर रखा हला again हेलो sir you got a call सुबिला ना नाही मोर कोन फोन कॉल पळे आसल सुबुची आज्ञा सर हमको सुबुची हेलो ना ये पुन फोन ये कर देले Sir, it's audible to us. हला हेलो Yes, sir. से फोन कॉल पळे आसले एटा ड्रॉप करियो नाउ नेक्स्ट थिंग इज बर्तमान तमे जानिलो अच्छा एई जो मु तमु कहिली throwing 2 coins at a time throwing 3 coins at a time throwing 4 coins at a time normal probability curve is based on this kind of event which is called mathematically a binomial expansion. Supposing I ask you to throw 5 coins at a time, what will be the kind of event? कौन event हबो? पांचटा कॉइन पकेले कौन इवेंट हबो? a5 plus t5 a to the power 5 plus t to the power 5 plus 5h square plus 5a square अच्छा इट्स ए गुड गेस बट नॉट द राइट थिंग केमिति बाहर करियो तमे हां तमे जानिचो a plus b रो होल स्क्वायर जानिचो a plus b रो होल क्यूब जानिचो अन्य गुडा का जानिनो 4 5 6 7 10 15 तेणु मु तुमको गोटे फॉर्मूला कहबी जो फॉर्मूला रे तमे एनी वैल्यू ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन सेटा हला a plus b to the power n लेखो खाता रे लेखो a plus b to the power n being any number बुझी परछो ना नहीं n 5 ही पारे 7 ही पारे 10 ही पारे 15 ही पारे n being any number लेखो तार फॉर्मूला a plus b to the power एटा जोटा कि तमे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कोन व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कलाल को डिस्क्राइब करे a plus b to the power n लिखिलो yes sir Yes, अच्छा sir. मु फॉर्मूला टा डाकी जाउछ तमे Yes, लिखिबो sir. हां a plus b to the power n is equal to No, but you have to answer when you ask. factorial n factorial जानिचो factorial रो चिन्ह जानि Yes, sir. the exclamation चिन्ह n साइड रे गोटे हां factorial n by मु जहा डाकुची फार्मूला लेखो factorial n by factorial 0 अच्छा मु लेखि करी देखि देले तुमको देखा दिबो yes sir Yes, sir. खाता Yes, sir. खाता रे
That will be अच्छा that will be better नहीं कि हो मु संगे संगे लिखी दूँ factorial n कौन था factorial 0 factorial n minus 0 factorial n minus sorry factorial n by factorial n minus 0 factorial 0 to the power n minus 0 to the power 0 plus factorial n by factorial n minus 1 factorial 1 to the power n minus 1 to the power 1. Is it visible to you? सर टिके ऊपर को उठान तो कॉपी टा सर टिके पछको That's good. yes sir now you are visible You write this much only. Then put dot 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 dot. Factorial n by factorial n minus 0 0 factorial 0. लिखिएगा yes sir now जदि h to the power 5 हुए ताले n Hello, तो sir. 5 हला मुझे कहली h plus t to the power 5 अच्छा तमे एई फार्मूला रे h plus t to the power 3 टा बाहर करो जो दिके 3 हला n फैक्टोरियल अर्थ जानछ ना नहीं फैक्टोरियल 3 माने 3 गुणन 2 गुणन 1 फैक्टोरियल 3 रो अर्थ हला 3 गुणन 2 गुणन 1 फैक्टोरियल 4 रो अर्थ हला 4 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 1 गुणन कोन जानछ ना नहीं मल्टीप्लिकेशन No, sir. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई Sir, can you please repeat? Sir, what is the formula for factorial 3? formula any factorial means factorial of any number is multiplication of that number up to 1 factorial 8 means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 whatever is the factorial it will be multiplied from that number till 1 तेणु एठी तमर a plus तमे लेखो a plus b cube is equal to what is the n here a plus b cube means a 3, is sir. 3 3, sir. 3, sir. 3 now you put that in this formula in place of n you put 3 and solve it. See what is the expansion of a plus what is a plus b cube तमे जो कहतले a plus b cube भूल हेछि बोली बतन ए फार्मूला रे पकई करी a plus b cube बाहर करो it is देखो factorial n means 3 into 2 into 1 देखो I am showing you factorial n n by 3 into 2 into 1 sir 6 अच्छा हैं 6 ये टोटल टा केते हला 6 3 into 2 into 1 6 ता तळे केते अछि n minus 0 माने 3 minus 0 equals to 3 3 ऊपर फैक्टोरियल 3 तळे फैक्टोरियल 3 कोन हबो कटि जिबो कटि जिवो आउ रहला गोटे फैक्टोरियल 0 इज 1 ताले टोटल वैल्यू टा केते हला सर ऊपर फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 3 रहिला ना फैक्टोरियल 6 कोन तमे फैक्टोरियल तो खोली देलो बली 6 हे गेला ना आउ भी सेमती फैक्टोरियल 6 पर 3 पर 6 divided by 3 2 6 कोठो आसिला फैक्टोरियल तो ऊपर 3 तळे भी 3 जति तमे खोली किरी कलो तळो भी खोलिबो हां तळटा भी फैक्टोरियल दीटा को फैक्टोरियल अछि ना एटा जदि तळटा जदि ऊपरटा 3 गुणन 2 गुणन 1 कलो सेम तळटा 3 गुणन 2 गुणन 1 ए ऊपर तळ टिकरी केते हला मते को फाइनली ऊपर फैक्टोरियल 3 तळे फैक्टोरियल 3 n minus 0 माने 3 फैक्टोरियल 3 कटि गला आ गोटे रहला केवल तळे फैक्टोरियल 0 त टोटल वैल्यू केते हला
एई समुदाय भ्यालुटा केते हला सब तो कटिगला 1 हबो कोन म फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 3 कटिगला फैक्टोरियल 0 is 1 1 by 1 is 1 Yes, sir. It's one. बुझियला ना नहीं Yes, sir. तापरे ता पाखरे देखो माने h plus n minus 0 n is 3 3 minus 0 is 3 तने h रो पावर केते हला 3. 3. 3 t to the power 0 anything raised to the power 0 is 1 5 to the power 0 केते 1. 1. तने एटा 1 हे गला तने समुदाय ये रे टर्म रे कोन रहिला टोटल टर्म रे केते रहिला ए टोटल एक्सप्रेशन ता कोन हला एपटे 1 एथि 1 ए केवल रहिला h q तने प्रथम ता हे गला h q सब एक्सप्रेशन कथि के h q हे गला बुझेला ना नहीं नहीं सर. तमरो Yes, sir. कोफिशिएंट पार्ट ता कथि के 1 आउ रहिला h 3 minus 0 माने 3 minus 0 3 तो h 3 by h q t to the power 0 is 1 1 रे 1 तारे गुणा हो बा 1 तारो जेकोन जगह रे गुणा हले तार किछ अर्थ नाही तेनु 1 को उठे दिया गला बर्तमान समुदाय एक्सप्रेशन हला h q ता परटा केते हला ता परटा को Plus factorial 3 divided by factorial 2 into 1 हां which is equals to 2. हां तळटा 2 आज्ञा. करू. Factorial तू 3 केमती divided. तू केमती हला ऊपर रहला 3 into 2 into 1 ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଯେମିତି ନ Sir, ଥାଏ ତଳ 3. ତଳ ତଳ गुडा ऊपर रहला 3 2 1 ए समुदाय फैक्टरटा केते हला को 2 हबनी 1. 1 केमती हबो ଅଛି 3 गुणन 2 गुणन 1 तळे रहला 2 गुणन 1 गुणन 1 काटिलो କଣ ହେଲା ऊपर रहला 3 गुणन 2 गुणन 1 तळे रहला 2 into 1 into 1 काटिले केते रहउची तळ ऊपर 3. 3. हां 3 तापरे Yes, that is what I said. हाँ, 3 हाँ। sir ऊपर 3 रहिला तळे 2 रहिला. तळे 2 कोन रहला 2 टा कटि जी माने ऊपर पूरा 3 into 2 into 1 हाँ हाँ 3. समुदाय टोटल एक्सप्रेशन बिकम्स 3 Yes sir. अच्छा तापरे रहले h to the power n minus 1 माने n केते 3 minus 1 2. 2 तमने h स्क्वायर तापरटा t to the power 1 1 लिखा जायनी तो एई फैक्टरटा केते हला 3 h स्क्वायर t बुझियला ना नहीं Yes sir. 3 h स्क्वायर t हला No, sir. बुझियला नहीं Sir t टा तो हमें 1 लिखिलु ना तो why No, should we sir. mention t? t रे पावर 1 माने 1 लिखा जायनी हाँ. 1 पावर टा लिखा But t जाय लिखा हबा. खाली t But t लिखा लिखा हबा. हां आज्ञा. t रे पावर 1 अछि ओ कोन 0 होइतिले जे 1 हे जिता t रे पावर आज्ञा. जेतु 1 अछि तनु सेले t तनु 3 h स्क्वायर t अच्छा या पर फार्मूला टा कोन हबो या पर फार्मूला टा प्लस फैक्टोरियल n या पर हम लिखि दोती प्लस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n प्रथमटा देखो n माइनस 0 0 ता परटा n माइनस 1 1 ता परटा कोन हबो हाँ. प्रथमटा हला n माइनस 0 0 द्वितीयटा हला n माइनस 1 1 तृतीयटा कोन लिखा हबो Sir, n minus 2. हां n माइनस 2 2 फैक्टोरियल तेणु तृतीयटा हबो n माइनस 2 h टू द पावर n माइनस 2 t टू द पावर 2 या हबो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल Sir 2 दिखा जाओनी. तमे एइटा को तमे लिखिबा कथा आउ देखैबा नै n माइनस Say जहा same. n minus 0 थिला n minus 1 हैला n minus 2 रहबो जेहा फॉर्मूला से रहबो. हां जहा फार्मूला शेयर है खाली 0 पर 1 तापर 2 तापर 3 जदि 5 थिबो फेराय
5 जाएंगे आउ किछ नै ऊपरटा तो फैक्टोरियल n सबुटी अछि फैक्टोरियल n रहइबो तापर देखो एई प्रथमटा होची h रो पावर द्वितीयटा होची t रो पावर देखो h रो पावर n - 0 t टू द पावर 0 तळे जो दुटा अछि से गोटे h रो पावर गोटे t रो पावर तेणु फॉर्मूलाटा तुम लिखि दियो लिखिलो देखा गला सर देखा जाओनी किछ नै आउ तो देखिबार किछ नै तमे तो वर्तमान से अनुसार चली जिवो आ कोन n - 2 2 माने ता परटा हबो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल 2 h टू द पावर n - 2 t टू द पावर 2 तापर आसीबो ता परटा आसीबो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल 3 h टू द पावर n - 3 t टू द पावर 3 सॉरी गला अच्छा वर्तमान मु तुमको एइतरे तमे को निजे कैलकुलेशन करी देखिबो जे a + b रो होल स्क्वायर सेही बढिया तुमको होमवर्क हला h + t टू द पावर 10 घरे बाहर करियो फार्मूला लिखि h + t टू द पावर 10 नहले मते पचारिबो काली पचारिबो काहार मु देखिबी काली एक्सपेंडिंग h + t टू द पावर 10 केते हिच मते काली देखेबो हला यस सर नाउ यस सर when with these events the probabilities are calculated for a large set of data and a graph is plotted on the on the extension formula this binomial expansion formula then it will be called probability curve बहुत लार्ज नंबर रो इवेंट को नहीं करी तार प्रोबेबिलिटी रे कर्व ड्रा करिवु सेते बेले सेटा गोटे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हबो तमे 10 टा को माने a प्लस सॉरी h प्लस t टू द पावर 10 को एक्सपेंड कर सरला परे मु काल तुम कहिबि जे ताको नहीं करी केमिति तमे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखै पारि ड्रा करि पारि वर्तमान आसिला नॉर्मल नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज characteristics of the normal probability curve. What are the basic fundamental characteristics of the normal probability curve? First, normal probability curve अच्छा हाँ any geometrical pattern has or can be expressed in terms of an equation जेकोसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न मनकर गोटे स्ट्रेट लाइन तार गोटे इक्वेशन अछि गोटे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल तार गोटे इक्वेशन अछि गोटे ट्रापेजियम गोटे सर्कल समस्त गोटे इक्वेशन अछि गोटे इक्वेशन सैटिस्फाई एन इक्वेशन सैटिस्फाइज द रिलेशनशिप अमंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न अच्छा सेम normal probability curve being a regular geometrical pattern has also an equation and that is the first property or characteristics of a normal curve prathama and in any equation to a geometrical pattern the expression is y is equal to something y in terms of a x and the normal probability curve ro equation hala mu dekhei debi tumku y is equal to n by standard deviation root over 2 pi e to the power minus x square by 2 standard deviation square एटी मु लिखि इक्वेशन तळे देखा जाउ इक्वेशन टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लिखिबो प्रथम प्रॉपर्टी देखा गला निकी टिके रुहन यस सर टिके ऊपर कोट हस्तो कॉपीटा हां y इज तळे लिखा द नंबर इज यस सर ताको लिखिनियो तनो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक लिखिबो द इक्वेशन टू द नॉर्मल कर्व इज दिस सर n divided by standard deviation 2 pi root over 2 pi yes sir root over sir आउ टिके ऊपर को उठा तो देखा जाओ yes sir sir that is e e
minus x square divided by 2. E minus x square divided by 2 standard deviation square. Yes, sir. That you have to remember only. You don't have to do anything. That you have to remember as the equation to the normal curve. Hello. This is the first. I tell you, this is one of the most regular question for any course. A question undergraduate पढ़ुची, a question PG रे पढ़ुची, a question MPhil रे पढ़ुची सबकी. What are the characteristics of the normal probability curve? अच्छा. Equation. First characteristics you have to write that the equation of the normal curve is y is equal to n by standard deviation root over 2 pi root over e to the power j. Then the second characteristics of the normal curve. The normal curve is a bell-shaped curve. Bell-shaped curve. Characteristic 2. It is a bell-shaped curve. ଏବଂ ତମେ ତା ସାଇଡ୍ ରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ସେପ୍ଟ ଫିଗର କରିକି ଦେଖେଇବ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଏ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କର୍ଭ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍. ବେଲ୍ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? What is a bell? Ghanti. Ghanti. And normal probability curve is like that. Girl. Then the third property of the normal curve is that it is bilaterally symmetrical. What is meant by bilaterally symmetrical? So the x, y, so the mean, median and mode, all of them lie at the same plane. It's the same point. That is the explanation. But what is bilaterally symmetrical? A man is a bilaterally symmetrical animal. What does it mean? So if you divide the curve into two parts, it will be equal on both sides. ଆମେ ଯଦି ପୁରା ନାକ ଲାଇନ୍ ରେ ନାକ ମଝିରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବୁ, both the sides will have equal halves. Another geometrical figure which is bilaterally symmetrical. ଆଉ ଗୋଟେ bilaterally symmetrical geometrical figure କୁହ. Square, circle. ହେଲା ସେମିତି normal probability curve. ତେଣୁ normal probability curve is bilaterally symmetrical and you will have to explain it. Like other geometrical patterns, this is bilaterally symmetrical because, and then next characteristics, the mean, median and the mode of the normal distribution coincide at one point. The mean, median and mode of the normal distribution coincide at one point. Then next property, next characteristic. Bilaterally, a normal probability curve is an asymptotic curve. Asymptotic. ASSYMPTOTIC. Asymptotic curve. What is an asymptotic curve? Asymptotic curve. So the curve approaches the base, but it never touches the axis. The base, but it never meets. Achha. Yes, sir. Then the next property, next characteristics is that normal probability curve has 99.26% of cases within plus minus 3 standard deviation. Plus minus 3 standard deviation bhitere more than 99.63% cases rahe. Plus minus 3 standard deviation. Next, normal probability curve is characterized by two scales in the baseline. One is Z scale and the other one is score scale. Z scale and score scale. Dita ko normal probability curve re thae baseline re. And then another property, the height of the normal curve is maximum at Z0
or the middle of the curve. Height of the normal curve is maximum at Z0 or middle of the curve. Then normal probability कौन characteristics अच्छी. Height is maximum at Z0. Then normal probability curve has two kinds of errors. Those are skewness and kurtosis. The skewness of the normal curve is 0 and the kurtosis of the normal curve is 0.263. Skewness and kurtosis of the normal curve 0 and 0.263. Normal, tapare next property, normal curves can be identified as leptokurtic, mesokurtic and platykurtic. Now, these are some of the characteristics of the normal curve, and when you get the question on the normal curve, characteristics of the normal curve, you have to write these characteristics and explain it by figures, by showing figures. What is asymptote? What is bilaterally symmetrical? What is bell shaped? What is kurtosis? ताकू सब characteristically figure रे demonstrate करिया पड़िबो बा picture माने figural demonstration करिया पड़िबो. That is the requirement. All characteristics and explain in terms of figure. Do you get an idea about what is the normal curve? Ask me. Anything that you want to ask? How in the normal probability curve? So how are there two scales in the baseline? So Z scale is there because the scores are converted into Z scores. So what is the score? Those are converted into Z score. Means we do not actually know what is the. I will be telling that. Now you will be understanding. When I will be discussing next thing, I am discussing. By that you will be understanding. Now let us discuss the uses of the normal curve. Say that by helping you to know the uses of the normal curve, you will be able to know how these two scales are there. Achha, I am reading out a problem of the normal curve, and you will have to have a solution for that. Achha. One of the use of the normal curve is to determine the percentage of cases in a normal distribution within given limits. Limits are the score, the scale value in the baseline of the normal curve. That is called limit score value. अच्छा, मुझे प्रश्न पढ़ुची. ये प्रश्नर उत्तर केमिति हबो मैथमेटिक्स जोटा कि तमरो largely you will face these kind of problems. Given a normal distribution of scores with a mean of 12, lekho khatare. तब खाली lekho mean of 12, mean is equal to 12, and standard deviation of 4. गोटे normal probability curve रो mean हैला 12, standard deviation हैला 4. What percentage of cases fall between 8 and 16? 8 एवं 16 भितरे केते परसेंट केस रहिबो एटा हला प्रश्न. वर्तमान गोटे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ड्रा करो. ड्रा कलो कागज रे प्लेन जस्ट ड्रा कलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. Yes, sir. अच्छा, now in the mid of that you draw a perpendicular line, mid of that.
mid of that percent ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି what is the mid of that ମୋର ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖ this is what is the normal curve and the midline is drawn पर ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତତ୍ତରେ କରିଥିଲି Sir, it's not visible. ଦେଖି ପାରୁଛ visible ହେଲା No, sir. Yes, sir. Sir, ଟିକେ ଉପରକୁ. ଉପରକୁ। Yes, sir. Probability ଏଇଟା of ଏଇଟା ହେଲା this midline is 12 କାହିଁକିନା mid ଦେଇଛି 12 Yes, sir. 8 କୋଉଠି ହବ ରତନ ପଚାରିଛି 8 ରୁ 16 ଭିତରେ ଏରିଆ କେତେ 8 କୋଉଠି ହବ sir ଏପଟକୁ towards the negative side, left So hand plus side. 1. ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ 8 ଏଇଠି 16 କୋଉଠି ହବ Towards the right hand side. ରାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ର 8 and 16 and this area is being asked what is this area do you see Yes, sir. now how to find out this area now you understand Anjani the scale is in 4 scale 8 12 16 this is the score scale now you can find out the area Yes, sir. by converting the score scale into Z scale. Z scale. Yes, sir. What is the formula for Z scale? Z is equal to So, score minus mean by standard score- deviation. mean by yes, Minus sir. mean by standard Yes, deviation. sir. Achha, then Yes, sir. what is the Z at the score point 8? Kete is Z? So minus 1. Minus 1. What is the score at 16? So plus 3. Plus 3 केमती एटा minus 1 है सेटा plus 3 केमती गला 16. 16 minus 12 by 4 4. 1. Okay, so Right. minus plus 1. minus 1 Plus plus 1 1. now you have to Yes, find out the area between minus 1 to plus you have to find out Yes, the sir. area between minus 1 to plus 1 hela Yes, sir. and Yes, that is sir. a table that is a book that is a table in the book and it will say that what is the area from Z0 to minus 1 and also from Z0 to plus 1 Z0 to minus 1 area is 34.13 Yes, sir. Z0 ରୁ -1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଆ ହେଲା 34.13 ତାହେଲେ what is the total area between 8 and 16 So 68.26. ବୁଝିଗଲା it's clear 68.26 ତେଣୁ ତମକୁ ଯୋଉ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ Z0 ରୁ 8 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଆ କେତେ your answer is 68.26 do you get the idea କିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲ Yes, sir. anybody who is not able to understand acha Sir, then no. କିଏ ବୁଝି ପାରିଲନି Yes. No, sir. ଶୁଣ ତମର 8 ରୁ 16 ଏଇ ଏରିଆ କହିଛି ଏ ଜାଗାରେ Z ବାହାର କରିବ Z ର ହେଲା ଫର୍ମୁଲା Z is equal to score minus mean by standard deviation ତମର ଏଠି 8 ହେଲା score Yes, sir. 8 minus 12 standard deviation ଦେଇଛି 4 Yes, sir. 8 minus 12 by 4 କେତେ ହେଲା 8 minus 12 by 4 କେତେ ହେଲା Minus 4. minus 4 Minus 1. minus 1 ହଁ ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା minus 1 Z Yes. ସେମିତି ଆର ପଟେ 16 ରେ କେତେ ହେଲା Z 4 by 4 is 1. ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା minus 1 Z ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା plus 1 Z ତେଣୁ ତମେ ଟେବୁଲରେ ଏରିଆ ଦେଖିବ minus 1 Z ର ଏରିଆ କେତେ ବା plus 1 Z ର ଏରିଆ କେତେ ଦୁଇଟା ଏରିଆ ମିଶେଇ ଦେବ minus 1 Z ର ହେଲା 34.13 plus 1 Z କୁ ହେଲା 34.13 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 68.26 Yes, sir. ବୁଝିଗଲି. ବୁଝିଗଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ବୁଝିଗଲ କି ନାହିଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା what percentage of cases lie above 18
18 ର ଉପରକୁ କେତେ परसेंट केस अछि बाहर करो So what is the mean? और 18 above normal probability कर्व रे मैं देखे दउची Sir, is this the same mean? हाँ सेम मीन सेम स्टैंडर्ड सेम स्टैंडर्ड डिविएशन रे 18 उपरକୁ कर्व रो केते अंश अछि what percentage of the cases lie above the curve किए बाहर करूची कौन करिवो मते मते पचारिबो जेतेबेले तमर आवश्यक पडिबो टेबुल पे मते पचार दबो मु कहि देबी So 1.5 is the Z score. 1.5 Z स्कोर ताले हमें 1.5 Z स्कोर रो एरिया बाहर Yes, करते sir. 1.5 Z रे एरिया हला Yes, sir. रम को संगे संगे 1.5 Z एरिया हला 43.32 1.5 Z रे एरिया हला 43.32 ताले आंसर केते हबो किए कहबो What आंसर is the percentage of 1.5 What is the रे question? एरिया हला 43.32 What will Yes, be the sir. answer 18 उपरକୁ केते केस रहइबो केते परसेंटेज 18 पर्यंत हला So 7. 18 concept हम क्लियर कर दूची up to 18 it is 43.32 up to 18 अच्छा मिडिल रो Yes, sir. हैं 18 above माने कौन करिवो Sir, माने So 12 50 minus 43.32. हैं 43 पॉइंट हां कौन करिवो ताको से पचारि we जे have to 18 रो above स्कोर So we हैं ताको subtract. calculate the area. ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେ ଦଉଛି ଏଇ ଦେଖ ଫିଗର ଦେଖ sir ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଗର କରିକି 6.68. ତମକୁ ଦେଖ Sir Exactly. 6.68. Yes, sir. ହଁ କଣ କଲ 50 So ମାଇନସ୍ we ଦ୍ୟାଟ୍ subtract 50. ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ 50 ମାଇନସ୍ Yes, ଦ୍ୟାଟ୍ sir. ଶୁଣ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ କର୍ଭ ଆଚ୍ଛା ସେ ପଚାରୁଛି 18 ର ଉପରକୁ କେତେ ଅଛି ଏଇଠି 18 यार उपरକୁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆଟା ପଚାରିଛି ଏଠୁ ଏଇଟା ହେଲା 50 ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର କଲେ 43 ପଏଣ୍ଟ समथिंग 50 ରେ ଏଇଟା ଫେର ଦେଲେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡିବ ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ Sir फेरी सुमित्रा देना माने हैं सब्ट्रैक्शन Yes, sir. Yes, sir. 50 माइनस Yes, तमे sir. I किछि got ओडिया it. टर्म न निकी Sir, बुझि होला ना नहीं Sir, yes sir, I sir. told you na, she is made in China. You can tell me I'm made in Britain, not in China. मेड इन चाइना नहीं की Sir, made in Britain, made in मोर England. मु एंड यू नो वेयर आई एम माने मेकिंग जो माने मोर पढुच ये So कोन you are made in Puri. स्टेटस पढुच जो माने से जानि पारे व्हाट इज माय मेकिंग अच्छा बहुत पिला मो स्टेटस पढुचंदी एंड तमन भितर ओनली वन आई नो एनीवे Yes. नाउ अच्छा So नेक्स्ट I also read. सेकंड यूज मु सेकंड यूज ता तुमको कहिबिनी तमे बाहर करिवो कारण फर्स्ट यूज एंड सेकंड यूज दे आर क्वाइट कॉम्प्लीमेंटरी प्रथमे हमको लिमिट दिया हिची एरिया पचरा हो सेकंड यूज हला एरिया दिया हितबो लिमिट पचरा छी बुझी होची ना नहीं प्रथम Yes, sir. फर्स्ट यूज मैं तुमको कहली टू फाइंड आउट द to determine the percentage of cases in a normal distribution within given limits तार लिविन लिमिट दिया है एरिया पचारुची सेकेंड यूज हला कोन एरिया दिया है लिमिट पचारु
अच्छा वर्तमान मु गोटे प्रश्न पचारि तुमको मत उत्तर करिवो अप्लाई योर स्ट्रांग कॉमन सेंस गिवन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर प्रश्न सुनो given a distribution of scores with a mean of 16 and standard deviation of 4 what limits would include the middle 75% of cases जदि गोटे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रो मीन हला 12 स्टैंडर्ड डिविएशन हला 4 ताले मिडिल 75% ऑफ द केसेस रो लिमिट केते मते के कहि परिबो 18.75. So मिडिल 18.75. नहीं सेमिति बाहर करि परिबो तमे आगो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ड्रा करो मु देखै दो सर ये क्वेश्चन आउतरे कहबे in a normal curve mean is 12 standard deviation is 4 what limits would include the middle 75% of cases मझी 75% केस रो दीटा को लिमिट केते मु तुमको चित्र रे देखौ छी तमे मते कहिबो So 9.375. नहीं सेमिति बाहर करती एट देखो एटा हला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देख दिसुची तुमको कर्व तो देखा जाउती ना नहीं Yes, sir. यस हाँ, सर वर्तमान मिडिल 75 माने एपटे 37.5 एपटे 37.5 एटा हला मिडिल 75 जानि पारलो कोटा मिडिल 75 37.5 मीन रो 37.5 लेफ्ट को 37.5 राइट की देखि परछो Yes, ये sir. देखि परनो समुद्र देखिलो तो वर्तमान से पचरची एई जगह रे लिमिट तेणु आगे एई जगह रे जेड स्कोर बाहर करिवो टेबुल देखि कि 37.5 रे जेड स्कोर केते मु जेड स्कोर तुम कहि दो 37.5 रे जेड स्कोर कहि दो 37.5 रे जेड स्कोर हला हाँ 1.15 37.5 रे जेड स्कोर हला 1.15 1.15 minus 1.15 এই জায়গার দুইটার যোগ করে এয়া 1.15 minus 1.15 বর্তমান তুমি জেড জানিল মিন জানিল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন জানিল স্কোর কেমতি বাহার করিব सर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला সেই ফর্মুলা পকাই বাহার করি মতে কো জেড জানিল মিন জানিল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন জানিল जेड हला 1.15 गोटे प्लस गोटे माइनस गोटे प्लस पकई बाहर कर गोटे माइनस पकई बाहर कर कौन हला मुंड बिंदिलेनी So it is coming in Anjani. 0 point. So it is something 0.28. जमा नहीं भूल कलो अच्छा तुमको मु कहि जेड इज इक्वल टू स्कोर माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन Yes, sir. ताले इक्वेशन पे कोन हबो 1.15 इज Into इक्वल 4. टू इनटू स्कोर माइनस मीन स्कोर Yes, हमर sir. जाना नहीं स्कोर का एस लिख Yes, देन sir. हमको स्कोर पे पता 2.85 है 2.85 2.85 कोटा को पटटा हला sir one plus point five. 3.75 माने तमरो सर इक्वेशन हला माइनस 1 2 माइनस पटटा यस सर तमरो इक्वेशन अच्छा माइनस हेले देखिबा एस स्कोर माइनस मीन बाय एसडी ना होनी
So we will 1.15 multiply. into 4 Yes, sir. तमे सेही इक्वेशन रे वैल्यू गुडा को पके देनो गोटे -1.15 रे पकेबो गोटे +1.15 रे पकेबो वैल्यू पके दी तो सॉल्व करबो कोन अच्छा नहले आ गोटे काम करो तुमको मु कहि z = स्कोर माइनस मीन बाय एसटी Yes, sir. ताले स्कोर रे फार्मूला कोन हबो z मीन So स्कोर Z इज इक्वल टू into standard deviation. मीन प्लस z into st मीन प्लस z into st स्कोर टा हिको मीन प्लस z into st बुझी परछ ना नहीं फार्मूला को बदलै देले मते बाहर करी कुओ एटा माने षष्ठ श्रेणी पिला अंक z 1.15 गोटे -1.15 गोटे मीन हला 12 स्टैंडर्ड डिविएशन हला 4 मते दीटा का स्कोर कुओ माइनस रे केते प्लस रे केते अंजानी Yes, sir. So I'm doing. So, but you said mean is 16. नहीं मीन ता 12 What ता is the mean? 16 नहीं मो मने नहीं मीन ता केते कहली प्रश्न रे मीन ता 12 1.35, sir. हैं 1.35. केने आछी मतलब कोन Sir, करूछो x is equals to mean plus z into standard deviation. हां मीन हला Which 12 implies- is equal to 12 plus 1.15 into 4 12 plus 1.15 into 4 केते होला Sir, So plus 18 habo. हैं Plus value टा 18. हां 18 12 15 चौक 60 बात नहीं तो सब भूल करूछो So 12 plus 52.6. 1.15 into 4 1.15 की 4 रे गुणिले 4.6 12 plus 4.6 is 16.6 गोटे हबो सेमती 12 minus 4.6 is equal to 9.4 गोटे हबो ए हां नहीं सॉरी 8.7.4 16.6. 7.4 बार 4 16 16.6 ए हबो दीटा 6. बार Yes, कर sir. देखो 16.6, sir. सेमती गोटे माइनस z देले केते हबो -1.5 हेले So minus 16.6. Minus 16.6. तो पिट्टी भी धरिकी 12 रु सेटा फेडा हबो परा सेटा माइनस तो z रे अछि जेते हेले से वैल्यू का Sir, 14, sir. हैं Sir, 14. 12 रु केते फेडा हबो मीन ता 12 परा 6. Yes, sir. 6. So 12. 1.15 to 4. तमे ठीक न कला पर So minus 7.4. हैं So minus 7.4. Minus 7.4. माइनस के इसला 12 रु तो फेडा हला 12 तो पॉजिटिव प्लस नंबर को आ माइनस कोड इसला Sir, minus habo. हैं अरे 7.4 Minus side टा 14 habo. So 7.4. 7.4. हमको माने फाइनली केते हला मते को बीटा को केते हला 7 point. ऊपर So 7.4. हां गोटे हला 7.4 And 16.6. हां बुझिए एटा कहार न हला 7.4 और 16.6 कहार न हला बुझिएला काली की मते क्लास करी दबो जे कहबो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करबो बिकाई अच्छा आई वुड थर्ड यूज ऑफ द नॉर्मल कर्व फर्स्ट यूज सेकंड यूज थर्ड यूज आ थर्ड यूज रो माने प्रॉब्लम मु कहूनी खाली कहि दउची to compare two curves
in terms of overlapping. It is like third use to compare two distributions in terms of overlapping. Fourth use is to determine the relative difficulty of test questions, problems, and other test items. Then fifth use is to separate the two given groups into subgroups according to capacity. यार प्रॉब्लम सब अच्छी मु प्रॉब्लम डिस्कस करूनी जदि किसी फेस टू फेस डिस्कशन हबो करिबी गला वर्तमान अदर थिंग्स अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आउ कोन कोन अछि normal probability curve एतिकी आउ किछ नै तापर आसिला टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स दीटा मीन भितरे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस जानिबा पाई आसिला स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स parametric statistics that will help you to know the significance of difference between two means Correlation. ETB ANOVA. T-test. significance of difference between two means जानिबा पाई Sir, T-test. ANOVA. T-test ना दीटा मीन पाई टी टेस्ट पैरामेट्रिक रे नॉन पैरामेट्रिक रे टी टेस्ट रो नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट कोन Chi-square. मान हुइटनी यू टेस्ट Mu. अच्छा टी टेस्ट टी हला इज a statistical test to know the significance of difference between two means दीटा मीन भितरे significant difference जानिबा पय हेले टी टेस्ट यूज करा जाए हला अच्छा टी टेस्ट रो तुमको आगुरु पढ़ा है टी टेस्ट Yes. Yes, sir. I think so, sir. अच्छा टी टेस्ट रो गोटे प्रॉब्लम मु डाकुची Yes, sir. बाहर कर दी पारी व्हाट इज द फार्मूला फॉर टी टेस्ट Sir, problem रो formula derive करिबो. फार्मूला टा को Sir, भूली गलु. mean 1 difference mean 2 by standard error of difference mean 1 difference mean 2 by standard error of difference हला और आज एति कि तमर मुंड खराब हे गलाडी तम पय काली मते रहिला टी टेस्ट मते खाली कहइबो अच्छा टी टेस्ट को दी प्रकार रो करा जाय इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कोरिलेटेड सैंपल टी टेस्ट what is the situation where you have to use independent sample t test and what is the situation where you have to use correlated sample t test Independent sample t-test for ungrouped data, and for group data we use the other one. no it's not that In T-test for independent means, independent sample t test hala when you compare two different samples boys and girls you compare independent sample t test when you compare two groups of subjects who are independent there you have to apply independent sample t test correlated hala when the data belongs to the same group of people मानकर गोटे ग्रुप पिला कर मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपेयर करू सेठी कोरिलेटेड बा ट्विन ग्रुप बा सिमिलर ग्रुप रो दीटा डाटा दैट इज कोरिलेटेड सैंपल अच्छा एसपीएसएस रे कोठी टी टेस्ट अछि व्हाट इज द प्रोग्राम इन एसपीएसएस यू कैन फाइंड आउट द टी टेस्ट टू कंप्यूट तमे टी टेस्ट कोठी जानि तमे टी टेस्ट कोठी करि परिबो को प्रोग्राम रे That's the statistics. भाषा स्टैटिस्टिक्स very prompt Versus statistics. सेहि पे तुम तारा कुछ जानिया पे चाहना anyway for today it is over tomorrow So we where will is t-test in SPSS?
comparing. पढ़ा है Sir. Yes, sir. इसलिए से खत्म कर खाली आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट की टेस्ट अनोभा आउ जा जा अछि आई विल बी टेलिंग यू डिटेल हला एनी क्वेश्चन Yes, sir. एनी क्वेश्चन Definitely हाँ not, कौन sir. पचार मैं जण जण को पचार Sir, दूँ I have. सुमित्रा डू यू हैव एनी क्वेश्चन Yes, sir. हाँ आस्क Sir, in binomial expansion, you told that a plus b n. हाँ a plus b to the power n हाँ To the power n. n is any So number when we are, yes, sir. हाँ When we are calculating ht to the power 10, so a plus b is to the power A plus n. b. That would be, नहीं supposing you are expanding h plus t to the power 10 yes, एमती sir. h plus t to the power 2 3 4 5 सेमती h plus t to the power 10 Yes, sir. and the formula will be factorial n means it is 10 here it is 10 No, sir. Factorial I'm telling 10. that a plus b to the power 10. Sorry, Hmm. a plus b to the power n. That will be a plus b to the power 10. a plus b to the power 8 n हाँ नहीं 10 n stands for any number n stands for any number So, Mitra, you are right. Hello. हैं हाँ n stands for any number do you listen to me Yes, sir. सुनो n होची a plus b to the power n माने n जे तमे ताको सेटा ले जनरल फार्मूला फैक्टोरियल n तमे जदि n ता 10 नेलो ताले फैक्टोरियल 10 रु आरंभ होबो जदि n ता 5 नेलो ताले फैक्टोरियल 5 रु आरंभ होबो सेटा जनरल Okay, फार्मूला n ता जे कोनसी नंबर हेले कोन होबो तुमको मु कहले n plus 10 a plus b to the power 5 ता एक्सटेंड करिवो तार तो तमे आरंभ करिवो फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 5 minus 0 रु जदि मु कहिता 7 ताले तमे आरंभ करता फैक्टोरियल 7 by 7 minus 0 बुझियो जना नहीं n होचे गोटे जनरल फार्मूला Okay, sir. आउ कहार कोन पचरिबार अछि Thank you, sir. थैंक यू nobody no question anjani do you have any question to ask No, sir. No, sir. but tomorrow you have to pass you tell me a plus b to the power 10 Yes, sir. एक्सपेंड करी करी मते आसिकरी काली फास्ट में पचरिबी मते कहबो a plus b to the power 10 Yes, एगो sir. जे कोनसी गोटे हां गोटे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रो कैलकुलेशन मते रिजल्ट कहबो दीटा दिन हला बाय आगे sir. आगे sir. Okay, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Have a good day. Sir, पढ़े लेडी बे